हेलो दोस्तों, वेलकम टू द SBI सिक्योरिटीज़ डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट। तो अगर हम इंडियन इक्विटीज़ की तरफ देखें तो कल फोर्थ डे था जब मार्केट ने लॉस को एक्सटेंड करा। इट वाज मेनली ड्यू टू द एशियन शेयर्स एंड द US इंडेक्स फ्यूचर डिक्लाइनिंग। और इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स टुक अ स्ट्रॉन्ग बीटिंग। अगर हम US इक्विटी मार्केट्स की तरफ देखें तो वो मंडे को स्लाइटली हायर एंड पे एंड हुए। दे आर स्टिल हवरिंग अराउंड द record लेवल्स। ये गेन्स लिमिटेड थे। मेनली द रीजन वॉज बिकॉज ऑफ द फ्रेश tariff threats that President Trump is planning to apply on Europe and Mexico. And along with that, the market is also bracing for the fact that the corporate earnings will be coming in the next week. और अगर हम एशियन मार्केट्स की तरफ देखें तो वहाँ पे भी एक मॉडेस्ट गेन रहा, मेनली because of the fact that people are starting to brush off that Trump's tariff threats will have any impact on the global trade economy. Oil prices remained lower as there was also a sharp fall which was seen around 2% on Monday, and it was mainly driven by the fact that President Trump's latest move to pressure Russia did not include any immediate action on the energy export. और आज के इम्पॉर्टेंट की डेटा पॉइंट्स जो आने वाले हैं उसमें है US के कोर CPI नंबर्स, एंड अलॉन्ग विद दैट यूरोप विल ऑल्सो बी रिलीजिंग द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स। साथ ही काफ़ी कंपनियों के आज की रिजल्ट्स आने वाले हैं, जैसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, HDB फाइनेंशियल सर्विस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, AWL एग्री बिजनेस, हिमाद्री स्पेशलिटीज केमिकल्स, नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट्स, जस्टाइल, स्वराज इंजन्स, हैथवे केबल्स एंड डेटाकॉम, GM ब्रूरीज एंड जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज. And if we look at the earnings post-market hours, we saw that HCL Technologies came in with their numbers wherein the revenue and the operating profits were high year on year while the PAT was lower. Overall execution during the quarter has been strong and momentum is likely to continue. Tata Tech के भी numbers आए जिसमें revenue and operating profits were down year on year while the PAT was up. Overall the performance was weak and has missed the market expectations. Rallis India also came out with their numbers, which were strong, and along with that, the management maintains an optimistic outlook on the export recovery. Tejas Network also came out with their numbers, in which the revenue and the EBITDA were down, and also it reported a net loss of rupees 193.87 crores. अब हम देखते हैं स्टॉक्स इन फोकस इन इंडिया। तो उसमें दीपक फर्टिलाइजर ने साइन करा है रीगैसिफिकेशन अग्रीमेंट विद पेट्रोनेट LNG. Under the terms of the agreement, Petronet Energy will regasify approximately 25 TBTUs of LNG annually. The size of the contract is around rupees 1,200 crores with an additional outlay of 20% over the contract duration. Sun Pharma ने US patent litigation का सूट सेटल करा है with Inside Corporation over Lexcelvi. कंपनी को एक नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस फॉर नॉन ऑन्कोलॉजी यूज मिला है, इंक्लूडिंग एलोपेशिया एरेटा इन US एंड द लॉन्च ऑफ लेक्सेल्वी इन द US फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिवियर एलोपेशिया एरेटा. एस्ट्राजेनेका फार्मा को गवर्नमेंट से नॉट मिल चुका है टू इम्पोर्ट फॉर द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डुरवालुमैब सोल्यूशन फॉर इन्फ्यूजन. इम्फिम्जी इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अडल्ट पेशेंट्स विद मसल इन्वेजन ब्लैडर कैंसर. RVNL को रिसीव हुआ है एक्सेप्टेंस फॉर ऑर्डर वर्थ रुपीज़ 447 करोड़ फ्रॉम द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन. रेल टेल ने रुपीज़ 264 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर सिक्योर करा है फ्रॉम द ईस्ट सेंट्रल रेलवे फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कवच ट्रेन कल्यूजन अवॉइडेंस सिस्टम. संभव स्टील ट्यूब्स ने अपने बिजनेस अपडेट रिलीज करे जिसमें 47% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी इन द टोटल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, और टोटल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के अंदर भी 50% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी. ओबेरॉय रियलिटी के अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने 919 करोड़ रुपीज़ का रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करा है ऑफ होटल होराइजन. This plan settles all the creditor claims and the CIRP costs with payment to be made within 45 days of the NCLT approval. पावर मेक प्रोजेक्ट कंपनी ने रुपीज़ 498 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर सिक्योर करा है फ्रॉम SGVN थर्मल फ्रॉम बुक्सार थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स एंड रुपीज़ 53 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम द झाबुआ पावर फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉयलर, टर्बाइन एंड जनरेटर्स. Along with that,
Indian Overseas Bank has reduced the MCLR by 10 basis points across the tenure effective tomorrow. So this is the wrap up for the day, and thank you for listening and hope you stay tuned for tomorrow. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.